Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the logical deductions. Let's start. Students, we are at the light board, and today, as I've just told you in the intro, we are going to do a very interesting thing, and that is the questions regarding logical deductions. Now this is, for me personally, this is the most interesting part of this subject. होता क्या है इसमें कि एक सर्टन सिनेरियो आपको दे दिया जाता है, एक सर्टन सिचुएशन आपको दे दी जाती है, एंड देन यू आर गिवन अ सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जहां आपको बताया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि विच कॉम्बिनेशन एक्चुअली सूट्स और फिट्स द बेस्ट. और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ जब आप प्ले करते हैं, व्हेन यू ट्विस्ट देम अराउंड, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. एग्जाम्पल हम करते हैं, ऑलरेडी हम इसमें कर चुके. उसी एग्जाम्पल के कुछ डिफरेंट सिनारियोज अब हम डिस्कस करेंगे. कुछ पहले वाले सिनारियो भी रिवीजन के लिए देखेंगे और कुछ और डिफरेंट सिनारियोज भी हम देखेंगे. बट एक चीज़ याद रखें, हाउ टू अप्रोच दीज थिंग्स, ये पहले करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. नंबर वन, जब आपको कोई भी सिचुएशन दी जाएगी तो there will be two different types of conditions. दो तरह की कंडीशंस जो है वो आपको दे दी जाएंगी. आपके लिए आसान तरीन तरीका क्या है? आसान तरीन तरीका इनको करने का ये है कि start with the basic or clear cut instructions. बेसिक जो कंडीशन होगी या बेसिक इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको आपने सबसे पहले देखना है. इट कैन वर्क, मैं लिख ही देता हूं आपके लिए कि इट कैन वर्क एज a starting point and the solution of a क्वेश्चन. जब आप अपनी बेसिक इंस्ट्रक्शंस को, जो आपकी बेसिक कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल कर लेंगे तो आपके लिए बाकी की कंडीशंस को मैनेज करना वो कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा. एक एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूँ एंड देन वी विल डिस्कस डिफरेंट सिनेरियोज अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम इसको अपनी इनिशियल एग्जांपल में भी कर चुके, बट अब हम उसके डिफरेंट सिनारियोज डिस्कस करेंगे. एक आध सिनारियो रिवीजन के लिए वहाँ से भी आपको कॉपी करवाऊंगा, बट प्राइमरीली हम क्वेश्चन सेम रहेगा, बट वी शैल बी डिस्कसिंग डिफरेंट सिनारियोज ऑफ द सेम क्वेश्चन सो दैट यू मे गेट कि एक ही तरह के क्वेश्चन को डिफरेंट हवालों से कैसे डिस्कस किया जा सकता है, एंड हाउ द सेम क्वेश्चन कैन हैव सो मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन वन क्या था जी हमारा, कि 6 inverted cups are laid on a table. Each cup has a solid colored painted ball under it. The color
of the balls are green, yellow, red, magenta, purple, and orange. The cups 1 to 6 are arranged in such a way that conforms to the following conditions. अब ये मैंने आपको बता दिया है कि कुछ कंडीशंस आपको दे दी जाएंगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही आपने वो सारा अरेंजमेंट, वो सारी कि सारा जो सोल्यूशन है वो आपने प्रेजेंट करना होगा. नाउ वो कंडीशंस कौन सी हैं जी? द ग्रीन बॉल must be under cup 5. Red and magenta balls must be placed under adjacent cups. And the third one is purple ball must be under a lower numbered cup than orange ball. So ये तीन conditions हमने fulfill करनी है. The green ball must be under cup 5, that is the first condition. Then secondly, red and magenta balls must be placed under adjacent cups, and then purple ball must be under a lower numbered cup than the orange ball. So questions देखते हैं कि questions हमें कैसे पूछे जाएंगे. The number one is what can be the possible arrangements of balls? अब ऑप्शन अल्फा देखें, green, yellow, magenta, red, orange, and then purple. Beta is magenta, green, purple, red, magenta, and orange. Charlie is magenta,
red, purple, yellow, green, and orange. Then we have delta, orange, yellow, red, magenta, green, and finally we have purple. And finally, the eta option is red, purple, magenta, yellow, green, and orange. Now considering this question, you can easily check. कैसे चेक करना, ये मल्टीपल, ये ऑप्शन आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इट कैन हेल्प यू आउट इन कंसिडरिंग सो मेनी डिफरेंट सिनारियोज. आपने करना क्या है, यू कैन चेक डिफरेंट सिनारियोज. फॉर एग्जांपल, पहली हमारी कंडीशन क्या थी, दैट द ग्रीन बॉल मस्ट बी अंडर कप 5. नाउ हियर वी हैव ऑरेंज at number 5. So option A is cancelled. Same is the case with B. We have magenta at number 5. So this option is cancelled. अब apparently आपको ये बड़ा confusing लगता है, but I am telling you that do not be horrified, do not be terrified by seeing so many different things. कोई मसला नहीं है इसमें, सिर्फ presence of mind use करेंगे तो you will do it. Then let's come to option C. Green is at number 5, so this option is checked. Second, red and magenta balls must be placed adjacent. Yes, red and magenta, they are placed adjacent to each other. So ये option भी क्या हुई, click होगी. And then the purple ball must be under a lower number cup. Now purple is at number 3 and orange is at number 6. So we can easily conclude that option C is our correct option. फिर भी हम बाकी options को देखते हैं. Let's see exclude कैसे करने. अब यहाँ पर green तो है, बिल्कुल है, at number 5 ही है, but here the purple ball is at the highest number. तो purple ball को तो क्या होना चाहिए था, it must have been under a lower number cup than orange ball. तो ये option भी क्या हुई, cross हो गई. Although we had two options that were considered correct because red और magenta भी साथ साथ थी and purple green भी जो थी वो it was at number 5, but purple was not under a lower number cup than orange ball, so ये cancel हो गया. और यहाँ पर आप clearly देख सकते हो green is at number 5, so option 1 is correct. Purple is under a lower number cup than orange ball, तो ये option भी क्या हुई, correct. But red and magenta, they are not placed under the adjacent cups. So इस वजह से हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी exclude कर देंगे. So this is how actually you do these questions. Do not be terrified by so many different combinations. If you simply apply the basic techniques, you will get your answer. अब इसी के कुछ और सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं. ये ऐसे ही लिखा रहेगा और सिनेरियोज हम बाकी दोनों साइड्स पे हम इसको डिस्कस करते हैं. बट लेट मी इरेज द बोर्ड फर्स्ट. Now students, let's work some more examples regarding the same question. Question number 2 is, ball of which color can be placed under cup 6? And the options we have are
green, magenta, purple, red and येलो। अब हमने जो पहले सिनारियो डिस्कस किया था उसमें आपको याद है कि हम लास्ट पे किसको लेके जा रहे थे, ऑरेंज पे। बट कैन इट बी द ओनली अरेंजमेंट, और कोई अरेंजमेंट हो सकता है? लेट्स सी। अब अंडर कप 6 वी ऑल नो 6 इज द हाईएस्ट नंबर, and be careful about these conditions as well. सब होगा क्या? Can we place green under cup 6? Obviously no, because the green ball must be under cup 5. So ये तो होना बिल्कुल ही possible नहीं है। Then can we place magenta? No, magenta cannot be placed because magenta के फिर साथ हम क्या लगाएंगे? उसके adjacent cup पे क्या आना चाहिए था? It must be red ball. And red ball cannot be placed with it because इसके जो adjacent होगा that can only be 5 and we already have green ball under cup 5. Example लिख भी देता हूँ, इधर देखें 1 2 3 4 5 and then we have 6. यहाँ पर green ball क्या है? It is a permanent thing to be. ये यही रहनी है, इसके अलावा और कोई चीज़ हिल सकती है, ये कोई बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नाउ इफ वी प्लेस मैजेंटा बॉल, फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इफ वी प्लेस मैजेंटा बॉल हियर, देन उसके एडजेसेंट तो क्या बचेगा? सिर्फ 5, और उसके एडजेसेंट वी नो कि क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी रेड, एंड सिंस वी कैनॉट प्लेस इट एडजेसेंट टू मैजेंटा, देन ऑब्वियसली मैजेंटा भी 6 पे नहीं आएगी। पर्पल, it cannot be the case because purple ball must be placed under a lower number cup than orange ball. तो purple भी obviously नहीं आ सकेगी because 6 is the highest number, तो वो lower number पे कैसे आएगी? Red, for the same reason we rejected magenta, red को भी हम क्या करेंगे? We shall reject because if we place red here, number 6, then we cannot place magenta ball adjacent to it. So our right option in this MCQ will be ऑप्शन ईटा, दैट इज येलो। आपने देखा कि कोई मुश्किल नहीं है, आपको बार बार उसकी वो पोजिशनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू सिंपली अप्लाई द लॉजिक्स, इफ़ यू सिंपली अप्लाई द कंडीशंस टू डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन गेट द आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेट्स सी अनदर सिनेरियो एंड चेक हाउ वी कैन मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। If the purple ball is placed under cup 4, orange ball can only be placed at alpha, beta, Charlie, delta and eta 2, 3, 4, 5 and then we have 6. Now you know that we need to place purple ball under a lowered number cup than orange ball. So अगर वो 4 पे है तो 2, 3, 4 they are automatically excluded because they are not the higher number than 4. तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। Now talk about 5 and 6. 5 can be used, but we know 5 is already occupied by the green ball. So 5 भी नहीं हो सकता. The only option we can choose is option eta because 6 पे रखेंगे तो फिर ही आपकी बाकी conditions जो हैं वो fulfill होंगी। और इससे पहले हम देख भी चुके, जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें देखा था कि ऑरेंज वाज एट नंबर 6, सो वहाँ पे इसको रखेंगे
और तभी हमारी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो सकेंगी. लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल रिगार्डिंग दिस सेम सिनेरियो. Which of the following options must hold true? इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसको हर सूरत में ठीक होगी तो तभी ये सारे सिनेरियोज फिट इन होंगे. अब याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेसेसरी एक्शन और नेसेसरी कंडीशन. ये ऐसी कंडीशन है जिसके बगैर आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती. दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन होती है और एक ऑप्शनल होती है. तो ये नेसेसरी नहीं है, ये ये ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है in which it has to be true in order to fulfill all these requirements. अगर ये इसमें ये नहीं होगा कि इसको चेंज भी कर लें तो मामला चल जाएगा. जैसे हमने यहाँ किया था ना कि येलो को हमने स्विच किया, 6 पे भी स्विच कर लिया और इधर येलो को 6 पे स्विच किया था और यहाँ ऑरेंज को स्विच कर लिया. तो दोनों सूरतों में हमारी कंडीशंस क्या हो रही थी, वो फुलफिल हो रही थी. जैसे यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, रेड, मैजेंटा और येलो, पर्पल, ऑरेंज, ये हमने कर लिया. दूसरा हम ये सिनेरियो भी कर सकते हैं कि रेड, मैजेंटा और ऑरेंज को हम क्या लें, यहाँ पर्पल इधर आ जाए और येलो इधर चला जाए. So yellow at 6 is an optional thing, but here we are not talking about optional thing. We are talking about a thing that has to be fulfilled. हर सूरत में उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं उसकी. So वो देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. Alpha is the green ball is under a lowered number cup than yellow ball. Beta is the orange ball is under a lowered numbered cup than green ball. Charlie, the purple ball must be under a lower numbered cup than green ball. Delta, the purple ball is under a lower number cup than red ball. एंड ईटा, मैं स्पेस की कमी की वजह से लिख रहा हूँ इसको, रेड बॉल इज अंडर मैजेंटा. सो इट इज अंडरस्टूड, ऊपर वाली स्टेटमेंट ही चल रही है. नाउ रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेसेसरी कंडीशन कि जिसको अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑप्शन ही नहीं बनेंगे, गलत हो जाएगी, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होंगी. Let's talk about the first one. The green ball is under a lower numbered cup than yellow ball.
तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। यहाँ ग्रीन बॉल येलो से क्या है, लोअर नंबर पे है, बट हमने किया था कि सपोज अगर हम ऑरेंज को ले जाएं इधर और येलो को ले आए इधर, तो इट इज ओके. So it is not a compulsion. We have been asked that something that must hold true. उसके बगैर बात ही ना बने. So it can be true, but it is not a must. ये prerequisite नहीं है. Then let's talk about the orange ball is under a lower number cup than green ball. We have also witnessed. यहाँ orange ball थी, तब भी सही था. Orange ball green ball से ऊपर चली गई, तो तब भी क्या था, बिल्कुल करेक्ट था. So यहाँ पर जो है वो कोई as such compulsion नहीं है. It can be under a lower number cup than green ball or it cannot be. दोनों ही सूरतें हो सकती हैं. Let's talk about D first. पहले हम D को देख लेते हैं. The purple ball is under a lower number cup than the red ball. जरूरी नहीं है. अगर पर्पल को हम यहाँ ले जाएं, ये वाला पर्पल उठा के इसको हम प्लेस कर दें यहाँ और इसकी जगह मैं कर दूं रेड, तो तब भी ठीक है. इट मीन्स कि दिस कैन ऑल्सो हैपन, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन. देखिए ना, यहाँ वो कह रहे हैं ना, द पर्पल बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन रेड बॉल. तो अब ये नहीं है, पर्पल बॉल इज अंडर रेड बॉल, लेकिन जब ये यहाँ थी तो फिर ये कंडीशन वायलेट हो रही थी. बट ये जो हमारी बेसिक कंडीशंस थी, ये हमारी क्या हो रही थी, फुलफिल हो रही थी. सो इट इज एन ऑप्शन बट नॉट अ कंपल्शन. एंड देन रेड बॉल इज अंडर मेजेंटा बॉल. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. देखिए यहाँ पर पहले रेड मेजेंटा बॉल से लोअर नंबर पे था, यहाँ पर रेड बॉल क्या है, मेजेंटा से हायर नंबर पे है. सो इट इज अगेन एन ऑप्शन. द ओनली थिंग विच मस्ट होल्ड ट्रू इज ऑप्शन सी. Why? The purple ball must be under a lower number cup than the green ball. इस green से इसको क्या होना चाहिए, green is at number 5. इसको क्या होना चाहिए, इससे कहीं कम ही होना चाहिए. Because if it moves greater than or if it moves to number 6, हमारी ये जो condition है, ये वाली थर्ड वाली, पर्पल बॉल मस्ट बी अंडर अ लोअर नंबर कप देन द ऑरेंज बॉल, दिस कंडीशन विल बी वायलेटेड. सो वी कैन सेफली से दैट ऑप्शन सी इज द ओनली ऑप्शन दैट मस्ट होल्ड ट्रू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस. सो यहाँ जो ये जो करवाने का पर्पस था, आपको मकसद ये था टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्शनल कंडीशन and a necessary condition. अब ऑप्शनल कंडीशन ये चारों ही हैं, A, B, C, D. अरेंजमेंट्स आपसे पूछे जाए तो all four can be the possible arrangements of the cups. But necessary arrangement क्या है, that is only option C. क्योंकि इसको अगर हम नहीं करेंगे, we are gone, done and dusted. फिर ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कभी भी ट्रू प्रूव नहीं हो सकेंगी. या confirming these statements will not be possible for us. So hopefully इसी एक क्वेश्चन के डिफरेंट सिनेरियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं एक और डिफरेंट सिनेरियो पे और देखते हैं कि वहाँ हमारे लिए क्या मौजूद है. Yes, students, we are having another scenario for us and then we shall discuss the questions related to that scenario. पहले आपके लिए सिनेरियो लिख देता हूँ. That is our question number 2. The manager of a commercial printing firm has 6 printing jobs, i.e. P, Q, S, T, W and X. For a particular week starting from
Monday to Saturday. Each job can be completed in one day. Only one job can be scheduled for each day. The jobs must be scheduled as per following conditions. So ये हमारे पास सिनेरियो है कि 6 जॉब्स हैं और इसके लिए हमारे पास 6 ही दिन है और एक जॉब को कंप्लीट होने के लिए एग्जैक्टली एक दिन चाहिए और एक दिन में सिर्फ एक ही जॉब हो सकती है, 2 जॉब्स आप असाइन नहीं कर सकते. सो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि करेक्ट कंडीशंस हमारे पास बेसिकली इसके टू फॉर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया हमारे पास पहले देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं. Condition 1 is P must be printed before S is printed. So this is the first condition. The second condition is T must be printed immediately before or after the day on which X is printed. And thirdly, W must be printed on Thursday. So these are the 3 conditions जिसमें हमें फुलफिल करना है और इनको देखते हुए हमें अरेंज करनी है ये 6 जॉब्स. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following can be an acceptable schedule for the week? यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, और नीचे आपके पास ऑप्शन सब A, B, C, D लिखता चला जा रहा हूँ. P, Q, T, W, X and then S. The beta option is P, W, S, X, T and then finally Q. Charlie is Q, X,
T W S P. Delta is T X P W Q S. And finally, that is delta, and eta is X P T W S Q. Now let's check this out कि इसमें से हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है. पहली बेसिक कंडीशन हमारी क्या थी? दैट वाज ऑब्वियसली दैट W मस्ट बी प्रिंटेड ऑन थर्सडे. अब इस कंडीशन को जब आप देखते हैं तो ऑप्शन बीटा क्रॉस आउट हो जाती है, बिकॉज हियर वी आर प्रिंटिंग X. सो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया. द नेक्स्ट वन वाज T must be printed immediately before or after the day on which X is printed. So T और X को क्या होना चाहिए? They must be printed on adjacent days. अब आप ये क्वेश्चन आ सकता है, you may think that it could have been easily written like that T and X should be printed on adjacent days. But the problem is we want to confuse you, and that is why in logical reasoning questions are asked in a lengthy and in a tiresome manner so that you may get confused very easily. So T and X must be printed on adjacent days. Let's see about the remaining options. Here T and X are not printed on adjacent days, so option alpha is also crossed. Option eta, if we talk about X and T, here too they are not printed on adjacent days. So this option will also not be considered. अब ये T और X प्रिंट हो रहे हैं और ये X और T साथ साथ प्रिंट हो रहे हैं. So let's talk about option C and D only. C को देखें, वो कहते हैं कि P must be printed before S is printed. Here P is printed on the last day. So ये वाली जो ऑप्शन थी हमारी, ये वाली जो कंडीशन थी, that is not fulfilled in D. So the right option, the right schedule for these jobs can only be option Charlie. So इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि how we can actually figure out very easily applying those basic conditions कि किस तरह हमारी ऑप्शन करेक्ट बनेगी. आए कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसी के सिनेरियो के हवाले से देखते हैं. Any of the following could be printed on such a day except, अब ऑप्शंस क्या हैं? Now any of the following could be printed on Saturday except one thing. वो कौन सी चीज़ हो सकती है जो सैटरडे को प्रिंट नहीं हो सकती? अच्छा, अब हमने ये कहा था कि P must be printed sometime before S is printed. So if P is printed on Saturday, just like in that case, ये ऑप्शन क्या होगी? This condition will be violated, and once it is violated, our option will not hold true. So our right option in this MCQ is definitely option alpha, that P cannot be printed on Saturday. इसके अलावा तो बाकी सारी हमारी ऑप्शंस सही हो सकती हैं. मतलब T को अगर हम सैटरडे पे करेंगे तो X इसके साथ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Q की तो वैसे ही कोई मसला हमारे पास Q की कोई कंडीशन है ही नहीं. And S is also, although it is a condition here, but
it does not basically hold us from putting S on the highest number on the last day, because it is evident क्योंकि S अगर ये है भी तो P तो इससे पहले गुजर जाएगा. So this condition will be satisfied. So this is the only thing that cannot be done on Saturday. P cannot be printed on Saturday, because if we do so तो हम अपनी ये basic condition जो है इसको क्या करेंगे, violate कर देंगे. Let's move to another question. Third question, that is, if Q is printed on Wednesday, which of the following could be true? Now, there is a difference between this question and the question we attempted in the last chunk, because in that last chunk we were discussing about a thing that must hold true. Here we are discussing about an option that could be true. So in दोनों में difference है. Must true, I have already explained in the last chunk कि must true का मतलब है कि if we do not follow that, our conditions will not be satisfied. So इन दोनों में बुनियादी एक difference है, एक core difference दोनों में मौजूद है. So let's see options हमारे पास क्या हैं. P is printed on Tuesday. S is printed on Monday. Charlie. S is printed on Friday. Delta. T is printed on Monday, and eta X is printed on Thursday. So now let's evaluate the options. कि कैसे हम इनको देख सकते हैं. Say the first one is if Q is printed on Wednesday. So पहले तो हम ये assume कर रहे हैं कि यहाँ हमने Wednesday को क्या किया, Q for example print कर रहे हैं. Then P is printed on Tuesday. Is it possible? No, it is not possible, because if we print Tuesday, if we print P on Tuesday, we are only left with Monday. ठीक है, ये दोनों slots already occupied हैं, because on Thursday we are already printing W. तो Thursday तो क्या है, already occupied है. And then फिर हमने वो जो करना है कि T और X उसको क्या होना चाहिए, they must be printed on adjacent days. तो वो कहाँ आएंगे? The only slot we are left with is Friday and Saturday. तो हमारे पास spare day बचेगा, वो क्या बचेगा, Monday. So the S, the remaining S, it will be, it has to be printed on Monday. So अगर हम S को Monday को print करेंगे तो ये वाली जो हमारी पहली option है वो क्या होगी, it will be violated, because P has to be printed before S. जबकि यहाँ पर हमारा S कहाँ आ रहा था, it was supposed to be printed on Monday. So ये option तो बिल्कुल भी valid नहीं रहेगी. Then S is printed on Monday. If S is printed on Monday, it is understood it cannot hold true. Why? Because if S is printed on the first day of the week, तो फिर ये option कैसे हमारी correct होगी? ये भी ऊपर यही scenario तो discuss किया, that this option cannot be considered, because if S is printed on the first day of the week, we cannot print P before S. That is our basic condition. तो ये बात भी बिल्कुल भी relevant नहीं रहेगी. S is printed on Friday. If S is printed on Friday, for example, here, for the sake of discussion, I am just putting it, if S is printed on
Friday, Thursday is already occupied by W, and we have already considered that Q is being presented on Wednesday. So we'll have to place T and X. तो T और X के लिए फिर जो alternate days बचेंगे, they will be only Monday or Tuesday. And now where shall we place the remaining P? It has to be placed on the last day of the week, so it will not be printed before S as per our requirement. So S cannot be printed on Friday. ये option भी क्या होगी? गलत consider होगी. Then T is printed on Monday. Yes, that is our right option. कि अगर हम यहाँ Monday को for example T करते हैं, तो here we can print X adjacent days पे आगे. Wednesday को Q हो गया, Thursday को already W है, and here we will place P, and on Saturday we will place S. So this is our correct option. Option eta जब हम देखते हैं कि X is printed on Thursday, तो ये क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा, because Thursday we are already occupied with W, because W को तो हमने Thursday को ही करना है. So option eta cannot even be considered for a while, कि इसको तो सोचना ही क्या है, मना है, इसलिए कि उस पर ऑलरेडी हमारा दिन ऑक्यूपाइड. सो होपफुली इन सारी एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन. If X is printed on Monday, which of the following must be true? Now remember, here we are talking about a necessary condition. Necessary condition क्या है? वो जिसे हर हाल में पूरा होना है. It's not an option, it's a compulsion. इसके बगैर जो है वो बात नहीं बनेगी. आपकी वो बेसिक 3 conditions वो कभी भी fulfill नहीं होंगी. So let's see what are the options we have. P is printed before Q. P is printed before W. Q is printed before S. W is printed before Q, and eta is W is printed before S. Now here we have the options. Just for your convenience, I am writing down the days once again, because that is already occupied. And then we have Saturday. So I have written the days for you. The first thing is, if X is printed on Monday, it is there, and we know that W must be printed on Thursday. So these 2 slots are occupied. अब हम बाकी की slots देखते हैं. P is printed before Q. It is possible or not? Let's check. अब ये X है, तो X के बाद यहाँ तो क्या आना है? यहाँ पर understood है, T आना है, because T and X they must be printed on alternate on consecutive days. इसके अलावा इनके हमारे पास और कोई option नहीं है. Then we can place Q and S, और यहाँ पर क्या आ सकता है? P. But it can go vice versa. Here we can place Q and here we can place P. तो हमारी basic condition तो fulfill हो जाएगी, because the condition was that P must be printed before S.
So it can be an option, but it is not a compulsion. That is where the difference lies. Last जो question हमने किया उसमें optional चीजें थी, इसमें क्या है, compulsory है. So this can be an option, but this is not a compulsion. Necessary condition नहीं है, so it will not be considered. P is printed before W. We have just seen that P, it can be printed before W or it can be printed after W. So beta is also not the right option. Reason बता दी already. Third option देखते हैं. If Q is printed before S, it can be a correct option or it cannot be, because दोनों ही हमारे पास viable options हैं. अगर हम P को यहाँ place कर दें, S यहाँ place करें और Q इधर place कर दें, तो it is okay, because all three conditions are fulfilled. P जो है वो S से पहले हो रहा है, और ये वाली जो option है Q is printed before S, ये option भी क्या है, इसके बगैर भी हमारी सारी की सारी conditions क्या है, fulfill हो रही हैं. So it can be an option, but it is not a must. Now moving on to the next one, W is printed before Q. हम देख चुके, it is also not a compulsory thing to have. हमने Q यहाँ रख के भी देख लिया और W के बाद भी रख के देख लिया. So this is also not a compulsion, not the correct option for us. And W is printed before S. Yes, that is the right option, because ये चीज़ कभी भी violate नहीं हो सकती. Because after like putting X and T here on Monday and Tuesday, we had one blank day, that is Wednesday. On Thursday we had W. Now if we do not do so, अगर हम W जो है, if we do not print it before S और S को हम यहाँ लगा देते हैं, तो फिर S will be printed before P, which is not according to the prescribed conditions. So the right option for us that must hold true in every case is option eta. Hopefully इन सारे scenarios से आपको बड़े अच्छे से clear हो गया होगा कि what is the necessary condition and what is the optional condition, और किस तरह इन दोनों में differentiate करते हुए आपने अपनी correct option mark करनी है. Let's students, we are at the light board, and as I have just told you, today we are further going to discuss the questions related to logical deductions. Now these questions will be very different from the previous lecture we had. So let's start the question. My purpose is actually to give you as many scenarios as possible, so that you may not have any difficulty whatsoever while attempting these questions in your exams. So let's see अब हमारे पास scenario क्या है. Seats on a small plane are assigned to 6 different passengers, i.e. P, Q, R, S and T. There are total 8 seats in the plane, and they are in 4 rows. The rows are numbered 1 to 4 with 2 seats each. Seats must be allocated
to the passengers as per following conditions. Now, what are the conditions? Condition 1 is n must sit alone in a row. That a row must be single-handedly assigned to n. The second condition is P must sit in the same row as R. कि P और R को क्या होना चाहिए? They must be in the same row. And at the third place, Q cannot sit in the same row as S. The row with only one passengers are 1 and 3. So here we have the complete scenario that there is a small plane and it has a total of 8 seats and they are arranged in 4 different rows. And we do not have the 8 passengers, we have actually 6 passengers. अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? थोड़ी grouping करनी होगी. And that is why I have chosen this question for you, because it will give you a different experience. It will give you a different sort of a challenge as compared to the previous 2 scenarios we discussed in the last lecture. So, अब हमें करना क्या है? That the passengers are 6 but the rows are 8. Though they are not evenly distributed. Last हमने जो 2 scenarios किए थे उन दोनों में the positions and the candidates, they were equally distributed. Like we had 6 balls for 6 cups, and in the second scenario, I'm talking about the last lecture, in the second scenario we had 6 jobs for 6 days. But here the scenario is a bit different. Here we have 8 seats for 6 passengers. Now it feels that it is quite convenient, it is rather easier than the previous question, but no, because here we'll have to follow the grouping. और वो grouping कैसे होगी? N will not share any passenger in his row. कोई बंदा ना उसकी रो में नहीं बैठेगा. Then we have a combination. P and R, they must sit in the same row. And then we have a difference. पुपो, ठीक है? Q and S, ये दोनों आपस में नहीं बैठेंगे. You can name any relation. I just like वो चूँकि चल रहा था social media पे, तो that is why I have named it. Otherwise, like whatever you want to say, you can remember it by any bad experience, I should say. So Q and S, they'll not sit together. ठीक है? लड़ाई हुई है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठने पे तैयार नहीं है. So it means we'll have to arrange at least one row for N and one row for Q or S. इनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा. And the rows with only one passenger must be 1 and 3. It means कि 2 or 4 में we can accommodate 2 people, but in 1 and 3 we can only accommodate 1 passenger. So ये total scenario है. अब देखते हैं पहला question इसका क्या आता है. Which of the following passengers could be
assigned the same row as Q. And the options we have are now let's talk about the different options. We know n is excluded because n must sit alone in a row. तो वो तो किसी के साथ रो शेयर करेगा ही नहीं. Then हम let's talk about p. p must sit in the same row as r. तो p के साथ भी नहीं हो सकता. Why? Because p will already be sitting with r. तो इसको q के साथ तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता because it is already there with the r. उनका ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है. Now r और q, let's postpone it और पहले ये देखते हैं. q and s, we have clearly mentioned that q and s cannot sit in the same row. So the option we have is r or t. Now we know that r must sit with p. तो r जो है वो भी q के साथ नहीं बैठेगा. So the only option we can conclude from this particular discussion that the only option that can sit with q is actually t. Why? Because बाकी हमने सभी में देख लिया n सिंगल रहने, p और r they should sit together, so they will not go with q, and s or q they must not sit together. That is why our right option here is option eta, that is the passenger t. Now let's go to the second question of it. और बार बार मैं आपसे कहता हूँ, there is no need to panic. These are only the different scenarios. अभी देखा ना कि हम बिल्कुल एक अलग सिनेरियो लग रहा था, बट जब हमने उसको टेस्ट किया under the conditions we had, so it became very evident that our right option is option eta. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हमारी क्या बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन मिलके क्या बनता है. If p and r are sitting in row 2, which of the following must hold true? ठीक है, और must be true, दोनों चीजें आप कर सकते हो. सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन कि p और r जो है कि रो 2 में है, तो फिर इनमें से नीचे कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी. लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर. n is in row 1, beta. Q is in row 1, Charlie. Q is in row 4, Delta. S is in row 3, and eta T is in row 4. So ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जी. लेट्स सी हम क्या देखते हैं. If P and R sitting in the row 2, just for your understanding, I am writing down the rows so that you may understand in a better and more effective way. Okay. So we are assigning P and R in the row 2. Now N is in row 1, and we know that Q cannot sit in the same row as S. तो Q को हम कहाँ बिठा देंगे.
because we have only row 1 and 3 that can contain one passenger. तो S और T को क्या कर देंगे? They will be at row 4. Now let's discuss this first option. N is in the row 1 but it can be on row 3. बिल्कुल ठीक है, row 3 में बैठ जाएगा तो तब भी सही है. Q will be shifted here and N can be shifted here. We'll have everything aligned क्योंकि N के लिए सिर्फ सिंगल रो में बैठना कंपल्सरी है, रो 1 में बैठना कंपल्सरी नहीं है. सो इट इज एन ऑप्शन बट इट इज नॉट अ कंपल्शन. बार बार कहता हूँ, try to differentiate between these two. What is the option and what is a compulsion? So it is an option but not a compulsion. Let's talk about B. Q is in row 1. देखिए Q रो 3 में भी है तो तब भी हमारे सारे ऑप्शंस क्या हैं, सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं. सो इट इज अगेन एन ऑप्शन. हो तो सकता है, जैसे मैंने भी कहा कि इट कैन बी शिफ्टेड हियर एंड एन कैन बी शिफ्टेड हियर. सो इट कैन बी एन ऑप्शन बट इट इज नॉट अ कंपल्शन. क्वेश्चन ऑप्शन सी देखिए, Q is in row 4. If we say so, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, because if Q is placed in row 4, it will have to sit with T and S will be moved here. So मतलब satisfy तो हो जाएगा, but again it is an option because हमने Q को row 3 में row 1 में भी करके देख लिया. It is fulfilling all the conditions. S is in row 3. ठीक है, S is in row 3. अब अगर S को हम यहाँ करते हैं, again it is just an option. It is not a compulsion. S यहाँ पर भी है तो क्या है, अपनी हमारी सारी की सारी requirements जो हैं वो पूरी हो रही हैं. And then finally T is in row 4. That is a compulsion. Why? Because if we shift T here, we know that in row 3 we can only have one passenger. So we'll have to move Q from here. तो हमें Q कहाँ लाना पड़ेगा? S के साथ, and that is not possible. Okay, if we move T with N, ठीक है, तो N यहाँ पर नहीं आ सकता. Why? Because N has to sit alone. If we move P and R, it cannot be moved because that is the prerequisite. इनको क्या होना चाहिए? इनको रो 2 में ही होना चाहिए. अगर हम कोई भी और arrangement करेंगे तो our options will not hold true. Our conditions will not be satisfied. That is why our correct option in this MCQ is option eta. This has to be true, otherwise these conditions will not be fulfilled. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स से बता भी दिया कि किस तरह से आप इसको काउंटर चेक कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस ऑप्शन इज अ मस्ट और एन ऑप्शन. सो अब कुछ और इसी के सिनेरियोस करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दीज डिफरेंट क्वेश्चंस. सो जी लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सिनेरियो एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या है जी. द थर्ड वन इज how many passengers are eligible to sit in the same row as T? Now that is a very tricky question. Let's see our options first. And the options are 1, 2, 3, 4 and 5. Why this question is tricky? Because apparently you will feel that the answer is alpha 1. Because आपको लग रहा होगा कि because there are only 2 seats in a row and 1 is already occupied by T. So understood है कि उसके साथ कितने लोग हैं जो बैठ सकते हैं? एक ही. But here we are not talking about the capacity. We are talking about the eligibility.
कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं टी के साथ? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. बी वेरी केयरफुल while reading a question. Remember, we are not talking about the number, we are talking about eligibility. अब वो eligibility क्या हो सकती है? देखें, if we talk about say row 1, row 2, row 3 and row 4. अब row 1 में हमने भी लास्ट में किया कि क्या होना चाहिए? n. यहाँ क्या होना चाहिए? P and R. यहाँ हमने क्या किया था? Q. और यहाँ हमने किया था S और T. If you go through this particular scenario, S can sit with P and Q can also sit with T. So eligibility कितनी होगी? 2 लोगों की. Okay. Is there an option कि हम क्या करें? P और R को वहाँ करने की बजाय मैं कर दूं P and S और इसको इधर ले आऊं R and T. Is it possible? No, it is not possible. Why? Because P must sit in the same row as R. तो P और R में से तो T के साथ कोई नहीं बैठ सकता. N, B, T के साथ नहीं बैठ सकता because we know that N must sit alone. So the only partners or the only passengers T can have with it is either Q or S. Because तीसरा तो वो खुद है ना, P, R उसके साथ बैठेंगे ही नहीं, उन्होंने एक साथ बैठना है, N ने अकेले बैठना है. So S और Q ही उसके साथ बैठ सकते हैं. So it can be either S or Q. But because both of them are eligible, that is why our right option will not be alpha. Our right option will be beta. So that is why I keep on saying, especially while talking about these types of questions, that be very cautious while you are actually reading the question. Here we were not talking about the number of people. We were talking about the passengers who were eligible actually to be with T. और उसके लिए हमने देख लिया कि P और R की eligibility इसलिए नहीं बन रही because they must sit with each other और N must sit alone. तो N और PR दोनों निकल जाएंगे. तो remaining 3 में से obviously एक तो T खुद है, तो बाकी सिर्फ 2 ही options बचेंगे जो कि eligible हैं to be with T in the same row. Let's move on to another scenario. If Q and T are assigned in the same row, which of the passengers could be assigned to sit in row 3? And the options we have are P, Q, R, S and T. Now if Q and T are assigned to sit in the same row, तो Q और T जो है वो तो क्या हुए? Automatically they must be excluded. इनका तो कोई question ही नहीं बनता. Then we know that P and R they must be sitting together. इनको भी क्या करना है? इनको भी साथ ही बैठना है. And we know that in row number 1 and 3 we can only accommodate one passenger. So it means P or R, they are not eligible to be in row 3. So that is why without any doubt our correct option will be option delta, that is S.
S will be assigned to sit in the third row, because we know that in third row we can only accommodate one passenger, and if we go for P or R, they will go in pair. That is why they are not eligible to sit in row 3. So you have seen that the question, which looked initially a very different, a very difficult sort of a question, it can be solved very easily using a bit of presence of mind and simply following the 3 or 4 instructions we have. अगर आप उनको फॉलो करते रहेंगे, क्लोजली फॉलो करते रहेंगे, तो देयर विल बी नो क्वेश्चन एट ऑल कि आप इन क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट ना कर सकें. सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिनारियो पे एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर डिस्कशन. ले स्टूडेंट्स, हम एक और सिनारियो डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव in this particular scenario, and the statement is six automated tasks numbering 1 to 6 are to be completed. Each task needs 1 hour to be completed. If 2 tasks are completed in such a way that no time elapses between the completion of and beginning of the next task. What should be the minimum time to complete the task conforming following conditions. And now the conditions are: number 1, task 1 should be completed before task 2 can be begun. The second condition is task 3 should be completed
before task or before 4 could be begun. And the third one is not more than one task can be completed at a time except task 4 and 5 can be completed concurrently. सो ये हमारे पास कंडीशंस हैं जी. आपने देख लिया कि 6 ऑटोमेटेड टास्क हैं. एक टास्क को कंप्लीट करने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है. और टास्क इस तरह से कंप्लीट होने चाहिए कि एक टास्क के ख़त्म होने में और दूसरे टास्क के स्टार्ट होने में देयर मस्ट नॉट बी एनी गैप, मस्ट नॉट बी एनी टाइम elapsed. तो ये भी देखना है हमने. और हमें चाहिए मिनिमम टाइम चाहिए, बट मिनिमम टाइम के लिए हमें कुछ सर्टेन कंडीशंस फॉलो करनी होंगी. एंड दैट इज द टास्क 1 शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टास्क कैन बी बिगन. तो ये करनी है. देन टास्क 3 शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टास्क 4 कुड बी बिगन. तो टास्क 3 को आप पहले करेंगे और 4 को बाद में करेंगे. एंड देन लास्टली इम्पॉर्टेंट है ये कि कोई भी टास्क जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा नहीं हो सकता एक्सेप्ट 4 and 5. 4 and 5 को जो है वो आप कॉन्करेंटली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो अब हम देखते हैं कि इसमें हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. एंड द क्वेश्चन इज which of the following could be the second task formed, and the options we have is 2, 3, 4, 5 and eta 6. Now you all know कि इसको हम इन्हीं 3 कंडीशंस पे पटन करेंगे. सो मैं यहाँ आपके लिए जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये हमारे पास आवर्स हैं. नाउ वी कैन ओनली परफॉर्म option, we can only perform the second task, or I should say the second task will be the task that will be performed at the second place. क्यों? Because 1 should be performed before 2. तो हर हाल में जो टास्क 1 है उसको तो क्या आना चाहिए यहाँ. अगर हम उसको यहाँ भी लेके जाते हैं तो फिर 3 और 4 ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी वायलेटेड. और 3 और 4 को क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 3 and 4 should be performed according to the second condition, that 3 should be performed before the 4th task could be begun. तो ये आ जाएगा. तो और एंड पे तो फिर हमारे पास क्या बचेंगे 5 और. अब अगर इसको हम यहाँ लेके आते हैं तो हमारी फर्स्ट 2 कंडीशंस क्या हो जाएंगी, दे विल बी वायलेटेड. सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी. कि हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगी, दैट इज ऑब्वियसली आवर option alpha, that the second task should be performed at the second place. Now moving on to the next question. The shortest possible time
in which the group of 6 tasks can be performed is beta, Charlie, delta, and then we have eta. It is 4, 5, 6, 7, and 2. Apparently, you may feel that the right answer is option Charlie, 6, because 6 टास्क हैं और 6 घंटे हैं. But remember, we have been asked to tell the shortest possible time. अब shortest possible time की जब हम बात करेंगे तो हमने कहा कि no more than 1 task can be completed at a time. ये तो हो गया. लेकिन साथ हमने क्या किया कि 4 and 5 can be completed concurrently. इनको हम at the same time कर सकते हैं. तो पहले हम 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे. 4, 5 को हम क्या करेंगे, 1 घंटे में इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम will move to our task 6. So अगर हम इनको करेंगे तो 1, 2, 3 and then 4 and 5. So the right option for us will not be option Charlie. The right option for us in this MCQ will be option beta. तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, presence of mind आपने शो करनी है, and the things will get lot easier. And one more thing, specifically in these types of questions, जो eye catchers है ना उनको बहुत avoid करना है आपने. You know what do we mean by eye catchers? Eye catchers are the options which seem true, which allure you a lot, attract बहुत करती हैं, बड़ी simple, convenient लगती हैं, but actually they are not. कोई ना कोई एक आध ऐसा वर्ड उसमें होता है. सपोज अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल ना होता, सिर्फ टाइम होता, तो फिर क्या होता, 5 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी. ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल थी क्योंकि 6 टास्क है तो 1 घंटे में 1 टास्क होना है. तो अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मेंशन ना हो तो वी कैन गो फॉर ईदर 5 और 6. बट नाउ वी हैव बीन क्लियरली टोल्ड that we need to tell the shortest possible time. So shortest possible time is not 6 hours. That is obviously 5 hours. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सिनेरियो से रिलेटेड. Which of the following cannot be true of any acceptable ordering of tasks? कि कौन सी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. एंड ऑप्शंस वी हैव टास्क 1 is completed before 2, beta. Task 3 is completed before 4, Charlie. Task 4 is performed before 6, delta. Five is performed before 3, and eta is six is performed after 3. Now here we need to see the basic conditions. वो क्या हैं? अगर हम पहली ए को देखते हैं
तो 1 इज कंप्लीटेड बिफोर 2, ये तो हमारी पहली कंडीशन है. सो हाउ कैन वी से दैट इट कैन नॉट बी ट्रू? इट हैज़ टू बी ट्रू. इसको हर हाल में क्या होना है? इसको तो ट्रू प्रूव होना ही है. देन टास्क 3 इज कंप्लीटेड बिफोर टास्क 4. It has to be true. And here we have been asked to point out what cannot be true. तो ये तो दो बिल्कुल opposite चीज़ें हैं. Task 3 is completed before, task 4 is completed before 6. This is true. We have seen that task 4 is completed before task 6. So it is obvious. 5 is performed before 3. अब 5 को अगर हम इधर ले आते हैं तो फिर हमारे लिए क्या होगा? This cannot be held true. It is not possible for us कि हम 5 को क्या करें? 3 से पहले परफॉर्म करें. Because if we do so, तो फिर हमारे लिए क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. Because 3 को फिर हमें कहाँ लाना पड़ेगा? We'll have to move it to 6. ठीक है. अब एक क्वेश्चन we'll have to move it to 5. एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है उसमें कि सर ये भी तो हो सकता है कि हम जो है वो 5 और 6 को यहाँ ले आए और 3 और 4 को उधर ले जाएं, तो फिर भी प्रॉब्लम ही रहेगी. ठीक है. बिकॉज फिर हम इन कंडीशंस को किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे ना. ये देखिए 5 इज परफॉर्म बिफोर 3. हम अगर 5 6 को यहाँ ले आए और इनको इधर ले जाएं 3 और 4 को, तो फिर हमारा वो जो था ये नंबरिंग 1 to 6 इसको एक सीक्वेंस में होना चाहिए. वो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा? इट विल गेट डिस्टर्ब्ड. तो 5 कैन नॉट बी परफॉर्म बिफोर 3. सो आवर राइट ऑप्शन इन दिस MCQ विल बी ऑप्शन डेल्टा. सो अब हम देखते हैं एक और सिनेरियो एंड लेट्स सी कि उसमें हमारी एग्जांपल्स और MCQs क्या हैं. Let's students, we are here with another example and this time our statement is two male singers P and S two female singers R and V, two male comedians T and W, and two female comedians Q and U are the 8 performers in a certain concert. Each of the performers has to perform alone and only once. The performers may perform in any order that fulfills the following conditions. अब वो conditions क्या हैं? आए देखते हैं. The performances of the singers
and comedians must alternate throughout the concert. That is the first condition. Second is the first performance of the evening must be by a female performer, and the second must be by a male performer. The final performance of the evening must be by a male singer. So ये हमारी स्टेटमेंट है कि दो मेल सिंगर हैं और दो फीमेल सिंगर्स हैं, and then we have two male comedians and two female comedians. So in all we have 8 performers on that night, and each of the performances has to perform alone. अकेले अकेले परफॉर्म करने हैं और एक ही बार परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. और कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? द परफॉर्मेंसेस ऑफ द सिंगर्स एंड कॉमेडियन मस्ट ऑल्टरनेट, कि अगर एक परफॉर्मेंस कॉमेडियन की है तो दूसरी किसकी होनी चाहिए? इट मस्ट बी फ्रॉम अ it must be of a singer. Then secondly, the first performance of the evening should be by a female performer and the second must be by a male performer. याद रखें, it's not about singers or comedians, it is only about the gender. And the third and final thing about that question is, or the third condition is, the final performance of the evening must be by a male singer. ठीक है, तो ये इसकी टोटल जो है वो कंडीशंस हैं. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव. Which of the following could be the last performer of the evening? A, B, C, D, E. Let's see. Now we have the options कि इनमें से performer, last performer कौन होगा? We know that the last performer should be a male singer. So इनमें से हमने देखना है कि male singer कौन सा है. If we talk about R, R is a female singer. So ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. If we talk about, let's see, T, तो T क्या है हमारे पास? T and W. T is a male comedian, so this cannot be the case. If we talk about V, V is a female singer. V cannot be the case. And if we talk about W, here, W is a male comedian. So W cannot be the right option. S को देखते हैं. What is S? S is a male singer. So out of these,
only S can possibly be the last performer of the concert. Why? Because it is the only male singer we have in that question. Next question देखते हैं. Which of the following could be the first performer of the concert? P, R, U, V, and at last we have W. Now let's go back to the conditions and check which of the following could be the first performer. A first performer क्या होना चाहिए था? Must be a female performer. It must be a female performer. Got it? So it is not necessary कि ये male हो, ये sorry singer हो या comedian हो. But last देखें, last is a singer. So if we have like it is a singer, अब मैं इसको reverse लेके जा रहा हूँ. We know that they must perform or alternate basis ना. तो singer तो यहाँ क्या होगा? Comedian. फिर singer तो यहाँ क्या होगा? Comedian. फिर singer तो यहाँ क्या होगा? Comedian. And then again singer और फिर क्या होगा? Comedian. और ये क्या था हमारा? Male. और ये क्या होगी? It must be a female or anything. But हमें ये चाहिए, alternate चाहिए. पहले comedian और फिर उसके साथ singer. और ये भी हमें पता है कि first performer क्या होनी चाहिए? It should be a female. तो यहाँ पर हमें चाहिए comedian और comedian कौन सा चाहिए? It's not the male comedian. We need a female comedian. तो female comedian देखें कौन से हैं हमारे पास? Let's talk about P. P is a male singer. So P को हम क्या करेंगे? We should obviously exclude it. Let's talk about R. R is a female singer. We need a female comedian. So this option will also be crossed. Let's talk about U. What is U? Two female comedians, Q and U. So U can be considered. Let's check. बाकी देख लेते पहले. What about V? Here, that is actually a female singer. So delta भी क्या हो जाएगी? Cross. And what about W? W is a male comedian. That is why this option will also be crossed. So right option is option Charlie, because it had to end in a male singer. ठीक है? और इन्हें alternate basis पे perform करना था. पहले क्या होना था? It must be a female, a comedian, then singer, then comedian, फिर singer, फिर comedian, फिर singer, और फिर comedian और फिर singer. So at the first place, because we need the first performer to be the female performer, so we need here a female comedian. So you have seen that we do not need to do anything extraordinary. हमें क्या करना है? हमें obviously थोड़ी सी presence of mind और इन conditions को समझ के इनको implement करके हमें वो सारे answers अपने find out कर लेने. उम्मीद है कि इतने सारे different scenarios के बाद आपको logical deductions का portion जो है वो बहुत अच्छे से clear हो गया होगा.